So I got this nail stickers. I got this nail stickers from Club Factory and I got it for about 350 rupees. As you can see in the packaging, it came in a packaging like this. It had so many stickers and all of them were so beautiful and in bright colors, and that was a good thing. The bad thing was there was no instructions as to how to use them. So actually I tried to figure it out how to use them. So I completely wasted 2 of the stickers in exploring the options of how to use them, and finally I found out a way. So I would like to share that way with you guys in this video. So let's get started. So I'll choose one of the sticker to try it on in this video, and I'll do a nail art and the review of the stickers, Club Factory nail stickers. Yay! So I've chosen this cherry blossom themed nail sticker for my nail art. Let's get started. Randomly choosing some of the nail paints in order to complete with my nail art, but because I was going for this cherry blossom theme, so I was choosing some pink colors and violet family colors, but only I used 3 of the colors. Let's go. A good nail art is good shaped nails. So make sure to have a filer or a buffer, or even you can get a nail cutter to get your nails in shape. Make sure to get them in a good shape. So now what I've done is I've just got the 5 stickers for each hand. You'll see a line, even if this is not visible in the video, you will see a line, it is visible. Now for what's the next step is, you will remove the plastic cover which is on the sticker first. Then secondly, you will put that paper into the water. Now what will happen is, the nail sticker that you can see in this video will get separated from the paper on which it is stuck. So you will easily be able to apply that sticker onto a nail. मैंने जस्ट अपनी ट्विजर्स की मदद से निकालने की कोशिश की है नेल स्टिकर को, बट आप जैसे ऐसे उंगली भी लगाएंगे ना तो भी ऐसे अपने आप निकल जाएगा। अभी उसको नेल्स पे स्टिक करना है। सो क्या करना है कि ऐसे तो नहीं चिपकेगा, तो मतलब या तो आप क्लियर नेल पॉलिश यूज कर सकते हो या फिर कोई भी ऐसे लाइट कलर की नेल पॉलिश भी यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि नेल वेट होगा, नेल पॉलिश वेट होगी तभी उसको चिपका देना है। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि नेल पॉलिश को ड्राई होने देना है, उसको वेट नेल पॉलिश पे ही लगा देना है, तो क्या कि वो इजीली स्टिक हो जाए। पहले आप क्या करेंगे, नेल स्टिकर चिपका के उसको हर एक एंड से सील कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा पीसेस जैसे बड़े बड़े विजिबल हो, आपको दिख रहे हो, वो छोटी सी सीजर लेके आप उसको बाहर से काट दे। फिर मैंने क्या किया है, ये मैट पिंक कलर का नेल पेन से ऐसे हाफ ऑफ माई नेल ऐसे उससे कवर किया है, ऐसे मैंने नेल आर्ट किया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर जो थोड़ा जो बच जाता है उससे या तो मैंने यहाँ पे ऐसे टूथपिक लेके ऐसे छोटा पीसेस निकाल दिया है, और या तो फिर आप नेल फाइलर लेके भी ऐसे उसको रिमूव कर सकते हो। तो मैंने दूसरे नेल्स में ऐसा किया है। फिर मैंने एक ग्लिटरी शाइनी एकदम लाइट कलर का शिमर पिंक जैसा शेड था, तो वो मैंने पूरा स्टिकर पे लगा दिया। आप या तो क्लियर पेंट भी लगा सकते हो कि जैसे नेल स्टिकर जो है वो पूरा ऐसे सील हो जाए, और बस। और फिर मैंने
एक ग्लिटर पेंट लेके आप देख रहे हैं कि मेरे नेल्स थोड़े साइज बड़ा है और स्टिकर थोड़ा छोटा था, तो मैंने क्या किया, जो ऊपर के एंड्स है, जो फिंगर्स और नेल्स के बीच में जो पार्ट है, वहाँ पे थोड़ा नेल स्टिकर का कमी रहा था, तो मैंने क्या किया है कि शिमर नेल पेंट से उसको कवर कर दिया है, जिससे कि क्या वो अच्छा भी लगेगा और जो स्टिकर छोटा था वो भी ऐसे नहीं दिखेगा। Guys, as you can see, we have done our nail art is completed. So guys, nail art kuch bhi nahi hai, it's just your imagination. Whatever thoughts you get, whatever creativity you can do it. Just don't stop yourself, do whatever creative work you can do. उसमें कुछ अच्छा बुरा सा कुछ नहीं है, तुमको जो अच्छा रहेगा वो अच्छा है, that's it. Stay happy, stay blessed guys, goodbye. वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।